Well, Ronnie Meghna, if you could please join me on stage while I bring on the rest of the team. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Fatima Shaikh. And इनके बाद अभी की जगह. And last but not the least, the captivating, the riveting, the wicked, Vicky Kaushal! गले लग लो उसके बाद में, because everything is going to start. Vicky, let me just start with you. Bro, Sam Bahadur. अब चाहे fictional character हो, you've already worked with Ronnie on a film like Uri, where you played a fictional character, then these real life characters. भाई, how do you get into the skin of these characters? Like how? तो मैंने उनसे काफी किस्से सुने थे कि फील्ड मैनेजर जो बहुत ऐसी फिल्में आती हैं जो ensemble वाली होती हैं जिसमें हमें लगता है कि why did the women have a So, जब पॉलिटिक्स की दुनिया से बुलावा आता है आपको तो क्या रिएक्शन होता है आपका? मुझे तो आया नहीं पॉलिटिक्स से बुलावा. फिल्म में? हाँ, फिल्म पे का बात कर रहा हूँ. ओह सैम बहादुर को आता है पॉलिटिक्स का बुलावा. सर, इस फिल्म में ना एक लाइन है जो टीजर में भी है कि पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ही मेरी लाइफ है. तो ये मेरे लिए पॉलिटिक्स बेस्ड फिल्म नहीं है, ये आर्मी बेस्ड फिल्म है. और जब भी आर्मी बेस्ड फिल्म से बुलावा आता है तो वो मेरा एक सॉफ्ट साइड है जहाँ मैं हमेशा टेम्प्टेड होता हूँ. बट you know, when it's about Field Marshal Sam Manekshaw, who's one of the most celebrated, people from the Indian Army, then it's very hard कि आप ऐसे opportunity को जाने दोगे. तो it's not the politics, it's the army. And इंदिरा गांधी जी को किस नाम से बुलाते हैं आप इस फिल्म में? टीजर तक तो मैडम, बाकी आप फिल्म देखिएगा. एंड रॉनी जी, क्लैश के बारे में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे. एनिमल एंड साम बहादुर, कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितना प्रेशर होता है आपको? फर्स्ट 1 तारीख को 2 फिल्में आ रही हैं, बड़ी फिल्म, आप अगर कुछ बता सकें. Ronnie, that question is on the 2 releases on the same day. Clash. Yeah, Clash. I got that. Thank you. Okay, 2 things on that. Firstly, I think if you go back and look at the social media, we announced 1/12/23, I think almost a year back. Oh, sorry, almost a year. Yeah, 1 year back on 1/12/22, we announced 1/12/23. That's one part. Second, I think for everyone here, Ronnie, this side to the right, to your right. People are flocking into the theaters. You know, it's a very good time. What are your expectations, by the way? sorry, what are our expectations for? Theatrical release, because people have started flocking into the My theaters. You know, expectation is that recently. there are about 63 empty seats here, and they should all be full. Hello, check. And Meghna, are you depicting all the wars that he represented in the decade of his service? 4 decades actually. Yeah, 4 decades. I hope so. Okay. And what responsibilities, Vicky, with this character? Lot of expectations again. It's a huge responsibility. Along with being a huge honor, it's a massive responsibility. Firstly, to wear the Indian Army uniform, but then if it's got a nameplate of. सर, मेरा सवाल आपसे है. हाँ जी. जब भी सिनेमा के रुपीले पर्दे पर मैं आपको एक जवान की भूमिका में देखता हूँ, तो मेरे मन में भी ये भावना जागती है कि मैं भी जाके बॉर्डर पे लड़ाई करूँ. हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग होंगे जब आपके सिनेमा के रुपीले पर्दे पर जवान की भूमिका निभाते वक्त देखते हैं तो ये भावना आती है. क्या आपको लगता है कभी आप एक्टर नहीं होते तो क्या बॉर्डर पे होते? देखिए, Hi, Meghna ji here, Runa from Weaponia. Hi. Here. No problems. yeah. Hi, Meghna ji, I really love Sam Bahadur ji. जितना पढ़ा है, जितनी सीरीज की है मैंने अपने कंपनी के लिए, इंटरव्यूज की. मेरा दिल बहुत दुखा था जब APJ कलाम साहब को उन्होंने बोला था मेरी बची हुई पेंशन वापस या दिलवा दीजिए. इस सीन उन्होंने नहीं बोला था. माफ कीजिए, अगर वो उन्होंने खुद किया था. प्रेसिडेंट कलाम ने खुद किया था, उन्होंने नहीं मांगा था.
माफ़ कीजिए फॉर दिस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। इस सीन को बनाने में, क्या ये सीन है और बनाने में आपको किन सेंसिबिलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ा है, क्योंकि दो बहुत बड़े सुपर हीरो बोल सकते हैं हमारे देश के सामने बैठे हैं। देखिए, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जो ज़िंदगी है वो 2 फिल्मों में हो सकती है। एक जो उनकी एक्टिव मिलिट्री लाइफ है, फ्रॉम द टाइम ही जॉइन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी टू हिज रिटायरमेंट एज फील्ड मार्शल। तो जानना चाहेंगे, चूँकि हम लोग बात कर रहे थे नई जनरेशन, हम बात कर रहे थे कि अगर मौका मिला तो आप शायद आर्मी ज्वाइन कर लेते। अग्निवीर जो कि आज के समय में बहुत यंग जनरेशन को मौका देता है, 12th के बाद आप जाके इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका खुद का पर्सनल क्या सोच है, क्योंकि आप ऐसे कई सारे रोल निभा चुके हैं? See, the thing is that I feel is Lovely teaser, no doubt about it. Meghna, when you're making a film on a person like Sam Bahadur, you are taking, of course, the anecdotes and incidents from his real life. When you portray a real life character, where do you draw the line? Are there any challenges you face that where you know that you have to stop and then resume telling the life story? It depends on the life and it depends on your intention. What is it that you're trying to do exactly? That cannot be compromised. No matter what incident you are portraying of his life or her life, and this I would think would apply to any real life incident or character, that the dignity of the incident or the person that you are talking about cannot be compromised. And that comes from the intention of making the film. Why are you making the film? Right? So, yeah. Thank you. Vicky, to your right, Justin here from Indian Express. Hi Justin. Hi. Vicky, 2 quick questions. I don't think it has happened before that you have a film coming out on that Friday, and the next week we have Katrina's film also hitting the big screen. What are the conversations like back home? What are the conversations like that? Yeah. Back home. No, she's excited for my film and I'm excited for her film. And she's not just got one film after my film, she's got one film 2 weeks before my film also. So I'm sandwiched between her films, which is a great spot to be in. You did mention about the clash and that it doesn't really matter, but as an actor, how are you looking at that Friday? Because the last time you and Ranbir were together, the dynamic was very different in Sanju. What's that Friday going to be like for you? I think that Friday, eventually we both are gonna... Mayur here from Beyond Bollywood. Right, you can see me. Sure. My question is for Meghna and Vicky. अगर आप भी उस पे जवाब देंगे तो बहुत अच्छा होगा. Meghna, in my limited interaction with army officers, always I get the sense that when you speak to them and you have to talk about successful operations, the tone is always about they will never talk about individuals but always about the regiment and the force as a whole. But obviously as a filmmaker and Vicky, for you as an actor, कि जब आप चाहे वो सैम बहादुर हो या फिर विक्रम बत्रा हो, so obviously when a director or a writer writes this film or when an actor acts in this film, do you have to also have to ensure that the screenplay or the performance doesn't end up being a one-man army show? I think we have a bit of both in this because we are... Sorry, because actually this is the only line in the whole... My answer would be the same as given by Ronnie sir and Vicky. Compliment for you that you and uniform are the perfect combinations altogether. That is very true. Thank you so much. Means a lot to me. Thank you. Straight. Hi. Good afternoon. I'm Vijay Lakshmi. My question is to both the lovely ladies, Fatima and Sanya. As we had Meghna's also lovely, huh? Yeah, of course. I meant. I'm just kidding. Sorry. So my question to both the ladies is, firstly, congratulations on the 7-year-long journey. It's been very momentous, I'm sure, for both of you. Given the fact that in these 7 years alone, we have seen so many new faces emerge, and for actresses especially, the space is always very competitive. As two young actresses in your own right, is there the pressure of qualitative work versus quantitative work? There is no competition. At least for me personally, I'm living my dream. And if Continue my Hello. question. Yeah, Meghna ma'am. Yeah. Here. Yeah, Meghna ma'am, I consider... Just one moment. Yeah. Just one moment. Yeah. She's been waiting for a while. Just one moment. मेघना जी, जस्ट अगर इस फिल्म की टीजर की बात करें तो आपने विक्की के टैलेंट को तो हम जानते हैं कि वो उसने बहुत हद तक मानिक शाह को उनको जिया है फिल्म में, लेकिन जो
71 का वॉर था और बांग्लादेश की भी बात थी, तो उसमें उनका सिर्फ ये जो आपने जो दिखाया कि उनका शौर्य, बहुत वीर थे, बहुत धाकड़ थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि इंदिरा जी को भी ऐसा सुना दिया उन्होंने। लेकिन जो वो वॉर जीती थी वो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड उससे जीती थी। तो वो जो इंटेलिजेंस है, जो उनकी उनकी जो कमांड थी, वो भी इसमें दिखाई है कि सिर्फ उनकी वीरता और देखिए, मैं एक तो ये नहीं समझती कि जो हमने वॉर जीती वो किसी एक इंसान का श्रेय है। उसमें हमारी कहा है कि वो आज़ादी के पहले भी आर्मी में थे और उस वक्त राय बहादुर का खिताब भी कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको नहीं भाता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये अंग्रेज़ों ने दिया है। तो क्या हम जानते हैं कि हमारे ये कितने बड़े रहे हैं फील्ड मार्शल, लेकिन क्या कभी उनके इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया था? क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी जब। नहीं, तो सैम बहादुर का खिताब उनको इंडिपेंडेंस से पहले नहीं, उसके बाद मिला। नहीं, वो तो बाद में मिला, लेकिन उस ज़माने में जब वो उन्होंने स्टार्ट किया था तब अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो क्या कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आया था, कुछ ऐसा? देखिए, वो ही वाज अ सोल्जर फॉर द आर्मी। अब वो आर्मी pride and honor, I had the opportunity to meet Sam Bahadur not less than 15 times. And even when I was in school, I did a military summer course where Sam Bahadur was invited as the chief guest. This was immediately after he got his field marshal. And why I'm speaking to you is he had a fabulous sense of witty humor. You know, he told us that it is humor which keeps us going, during the war crisis. And every fourth sentence, people were laughing. It is like how you have a stand-up comedy, na? He had a fantastic sense of humor. Even otherwise, after I met him, I will tell you personally what all he shared with me, but I just wanted to check whether this aspect of Bahadur has been, used in the movie. Has it? Like you rightly pointed out, sir. Very outspoken, Yeah, a little too candid. which is really Sometimes. Yes, all of that is there in the film. So he used to always say, I hope I have not said anything controversial. Vicky sir, my question to you now. Hi, sir. Sir, you have been getting yourself molded very well, whatever you play. So now you're doing a Parsi's role and you're saying next to Parsi. Okay? So I just want to know that how you got molded, because Parsis are short temper, as you know that. And Are you Ronnie? It's a dig at you. so the character and the body language of Meghna ma'am showed, you saw that it's really very good. Really, you had got the right track of Parsis. Thank you, sir. And you have done that thing. So how difficult or how easy was it? Have you taken any kind of lessons for that? I just hope that after this film releases, I get. You worked with him in Razi, where he had a smaller role compared to Alia, who was the main person. So did you see Sam Bahadur already in him when you were working in Razi? Because you had started in 2016. What? No, I didn't. The reason was that I didn't have my script at that time. We were only into research, and I started seeing an actor only once I have the script. And once I had the script, that's what happened. And have you seen any kind of growth change in him since Razi, from Razi to I have Sam to say it Bahadur? in front of him only. बोल दो ना क्या करें? So I mean, the joke he makes is that Razi में मुझे एक dialogue नहीं दिया था. Your journey from Razi to Sam Bahadur, and you're working with Meghna. I think for me, what happened during Razi was that there's a certain kind of blind trust that just organically happened, where All right, ladies and gentlemen, one last question. I can talk about just one last. एक आखिरी. Yes, sir. One last question. Hi, Vicky. Ravi from ABP News. Hi, sir. मेघना मैम, आपके लिए भी एक सवाल है। विकी, जब इस तरह की कोई फिल्म बनती है जो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है और इस दुनिया में नहीं होता है,
तो ऑब्वियसली जो लिखा जाता है, जो रिसर्च की जाती है, उसके आधार पे वो कैरेक्टर निभाया जाता है। लेकिन फिर भी एक एक्टर को अपनी इमेजिनेशन का काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ता होगा, क्योंकि वो शख्स सामने नहीं होता है जिससे हम सीख सकें और देख सकें उसे। तो उस लिहाज से इस किरदार को निभाना आपके लिए कितना मुश्किल था? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक मेरे लिए सबसे ट्रिकी पार्ट ये था कि मानेकशॉ सर के जितने इंटरव्यूज हैं ऑनलाइन अवेलेबल, वो सारे इंटरव्यूज हैं व्हेन ही वाज पास्ट 70, व्हेन ही वाज रिटायर्ड। एंड मुझे इसी से जुड़ा आपसे भी एक सवाल है। एक हिस्टोरिकल फिल्म में, हॉलीवुड में भी ऐसी कई फिल्में बनती है, भले ही हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड फिल्में हो, लेकिन उसमें क्रिएटिव लिबर्टीज बहुत ली जाती हैं। यहाँ भी ऐसी फिल्में बनी हैं। आपने क्या इस फिल्म में कहीं वो स्कोप था कि आप क्रिएटिव लिबर्टी लें, कुछ अपनी तरफ से ऐड करें ताकि सिनेमैटिकली और इंटरेस्टिंग फिल्म बने? Picture with the entire team. Yeah, we'll get the chairs out. Can we just clear the area right in front of the stage? Can the team from Sam Bahadur who's sitting at the back, can you just make your way down here? Vicky, please. Fatima. All right, ladies and gentlemen, thank you so much. See you in the theatres on the 1st of December. Come guys, come. Sam Bahadur crew, come here. Excuse me, black t-shirt. भाई पानी बॉटल लेकर भी समझ गया है, जो पानी की बॉटल लेकर भी वो फिल्म के अंदर जानते नहीं है। मैं देखिए हूँ काम मैडम बैठ जाइए Is everybody here? Be looking inside. Horizontal. Horizontal.
Thank you. Thank you. Sahil. Thank you. Thank you. Thank you, sir. अरे भाई, thank you यार. काम के अंदर नहीं आते हैं. काम के ऊपर सोचा यार ये सारे के साथ अंकुर भी नहीं आया हाय हाँ यार देख लो यार बेचारी 2-3 उसको नहीं मिल रहा उसको देखा तुमने कुछ हाँ वो है ना अभी not change no same उमेश दादा आफ्टर पगले Gee, that's weird. At times, yeah. I'm also a teacher's pet, a director's pet. Like, different journals for all my characters. Like I can still go back and read whatever I've written for them and shoot it again. Anytime. But chutki nahi another round of acting workshops. Chutki section. I'm glad she is not there. No, I'll be offending a lot. That was crazy, yeah. Because when you went the thing, my God, something viral video. मैं कभी भी सोचती नहीं हम लोग इंटरव्यूज अपलोड हो रहे हो आज को